Assalamu alaikum students. So I hope you all are fine. So in this video we will solve exercise 1B question number 3 from Think New Syllabus Mathematics book 2. And if you have not watched the video for question number 1 and 2, please watch that video first. So this will be easier for you to understand this question. Alright. So in this question, you need to draw the graph for these functions. You need to draw the graph for these functions. Let's read the statement. Uh, on a sheet of graph paper, you need graph paper for this question. Using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on x-axis and 1 centimeter to represent 2 unit on y-axis. Draw the graph. You need to draw the graph for the following functions, and you need to take the values of x from -4 to 4. तो x की वैल्यूज आप -4 से 4 तक ले सकते हैं. -4 से 4 तक आपके पास 9 वैल्यूज बनते हैं. -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. सो हम इन 9 वैल्यूज के लिए ग्राफ जो है वो 9 वैल्यूज के लिए इस फंक्शन को सॉल्व नहीं करेंगे. वी विल टेक 3 वैल्यूज. हम सबसे मिनिमम वैल्यू लेंगे यहाँ पर जो कि -4 है. सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज 4 एंड इसकी मिडल वाली वैल्यू 0 जो है वो ले लेंगे. और इस फंक्शन में जो है x की वैल्यू को पुट करेंगे और y की वैल्यू को निकालेंगे. x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे एंड देन वी विल प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर. तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल्स टू -2x + 5. इसको हम सॉल्व करते हैं. सो लेट मी ज़ूम द स्क्रीन. y इक्वल -2x + 5. हमने इसका जो है वो ग्राफ जो है बनाना है. तो हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन x is equals to -4. So जब x -4 होगा तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या, y इक्वल -2 और आगे x की वैल्यू आ जाएगी जो कि -4 है एंड +5 आ जाएगा. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4 + 2 8 आ जाएगा. सो 8 + 5 विल बी इक्वल्स टू 13. सिमिलरली जब हमारे पास x की वैल्यू 0 होगी तब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी. सो y विल बी इक्वल्स टू -2 इंटू 0 + 5. सो ये आ जाएगा 0 + 5 दैट विल प्रोड्यूस 5. नाउ व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, when x is equals to 4, so y इसके इक्वल आ जाएगा. so y will be equals to -2 into 4 plus 5, so that will produce -8 plus 5. so -8 plus 5 will be equals to -3. अब यहाँ से आप गौर से देख सकते हैं. तो ये हमारे पास जब इस फंक्शन को में हमने x की वैल्यूज पुट की हैं तो हमारे पास ये y की वैल्यूज जो है वो आ गई. ऑलराइट. सो नाउ जब x की वैल्यू -4 है तब y की वैल्यू आ जाएगी 13. जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 5. जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आ जाएगी -3. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास तीनों वैल्यूज जो है वो आ गई है. अब मुझे बताएं बेटा कि हमारे पास जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू -30. तो पहला कोऑर्डिनेट आ जाएगा -4, -13. तो आप इस तरह कोऑर्डिनेट लिख लें तो इजी होगा आपके लिए. 0, 5 और 4, -3. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स फॉर द फंक्शन y इक्वल -2x + 5. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब बी पार्ट में देखें हमारे पास जो फंक्शन है वो है y इक्वल -2x + 3. y इक्वल -2x + 3. सो हम इसको सॉल्व करते हैं. Now let's start. So when y is equals to when x is equals to -4 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास. So y will be equals to -2 into -4 plus 3. So ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस. तो ये आ जाएगा 8 + 3. तो 8 + 3 आपके पास आ जाएगा 11. ठीक है बेटा. जब x की वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. When x is equals to 0 तब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी. y will be equals to -2 into 0 plus 3. So that will produce 0 plus 3 और 0 plus 3 आपके पास आ जाएगा only 3. ठीक है बेटा. और अब हम x की वैल्यू जब 4 होगी तब y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. When x is equals to 4, so y किसके इक्वल आ जाएगा. y will be equals to -2 into 4 plus 3. So आ जाएगा -8 plus 3 that will be equals to -5.
Let's put these values in table. When x is equals to minus 4, y is 11. When x is 0, y is 3. When x is 4, y is minus 5. So y हमारे पास आ जाएगा -5. ठीक है, all right. So now let's write the coordinates again. So इसके coordinates आ जाएगा -4, -4, 11. अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर गलत लिख लिया, अभी अचानक नजर पड़ी. So -4, -13 ही -4, 13 -4, 11 and then दूसरा coordinate आपके पास आ जाएगा 0, 3 and third coordinate will be 4, -5. Let's solve for C part. So C part में हमारे पास जो given function है वो क्या है, y इक्वल -2x-4. So जब हमारे पास x की वैल्यू होगी -4 तब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. So now when x is equals to -4, so y will be equals to -2 into -4 -4. So -2 into -4 that will produce 8 and 8 minus 4 will be 4. ये आपके पास आ जाएगा 4. जब x की वैल्यू 0 होगी, when x is equals to 0, तब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी. So y will be equals to -2 into 0 -4. So that will produce 0 minus 4 and 0 minus 4 will be equals to -4. All right. Now when x is equals to 4, let's find out the value of y. When x is equals to 4, so y will be equals to -2 into 4 minus 8. तो ये आ जाएगा -2 into -4 and -4 आएगा यहाँ पर. So that will produce -8, -4 and -12 आ जाएगा आपके पास. Now let's put these values in table. When x is -4, y is 4. So this will be 4 over here. When x is 0, y is -4. When x is 4, y is -12. Alright, so ये हमारे पास जो है वो values आ जाएंगे. Hopefully आपको यहाँ तक सारा clear हो रहा होगा. Let's write the coordinate for this function. So यहाँ देगा -4, 4, 0, -4 and 4, -12. Alright, let's solve for last function, that is y is equals to -2x -7. So when x is equals to -4, let's find out the value of y. So y will be equals to -2, -4 -7. So that will be 8 minus 7 will be equals to 1. And now when x is equals to 0, when x is equals to 0, so y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y will be equals to -2 into 0 minus 7. So 0 minus 7 will be equals to -7. Now when x is 4, so y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा. So y will be equals to -2, 4 -7. So -2 into -4 -8 आ जाएगा, and -8 into -7 will be -15. ठीक है बेटा. So ये हमारे पास values आ जाएंगे. Let's put the values in table and write the coordinates. So -4 is 1 and 0 is -7 and 4 is -15. Okay, so now the coordinates will be -4, 1, 0, -7 and 4, -15. So these are the coordinates. Now the next main step or the main part of the this question is drawing the graph. अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले वैल्यूज देखनी, x की मिनिमम वैल्यू क्या है. x की सारी वैल्यूज -4 है, सबसे छोटी वैल्यू x की -4 है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है. एंड y x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी 4 है, आप चेक कर सकते हैं. तो डेट मीन हमें x एक्सिस पे जो वैल्यूज लेनी है वो
5 और -5, यानी हम एक वैल्यू एक्स्ट्रा ड्रॉ कर लेते हैं। 4 -4 है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, 5 और -5 जो है हम ड्रॉ करेंगे। अब y की वैल्यूज आपको इन सारे फंक्शंस के लिए जो y की वैल्यूज है उनको चेक करना पड़ेगा केयरफुली, और आपने मुझे देख के बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y की मैक्सिमम बड़े से बड़ी वैल्यू y की कितनी आ रही है। सो यू कैन चेक दैट y की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, -15, नो विच सबसे छोटी वैल्यू। सो y की मैक्सिमम वैल्यू 13, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो 13 आ रही है, और मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या आ रही है y की, -15। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो y एक्सिस पे ऊपर की तरफ यहां पर कितने बॉक्सेस चाहिए, 14 तक वैल्यूज ड्रॉ करनी है आपने, तो आपको 7 बॉक्सेस चाहिए, क्योंकि आप 1 सेंटीमीटर टू यूनिट का जो है वो ड्रॉ कर रहे होंगे। और नीचे वाई एक्सिस पे -15 है तो -16 तक करना पड़ेगा, -8 बॉक्सेस है। तो ये आपको इजीली जो है वो आइडिया दे देता है कि आपने ग्राफ प्लॉट कैसे करना है। अब आपने एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर के बाद 1 यूनिट लिखना है, और 1 सेंटीमीटर के बाद 2 यूनिट लिखने हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बस एस्टिमेट करना है कि आपके पास ऊपर की तरफ y एक्सिस पे कितने बॉक्सेस चाहिए। हमने कर लिया था कि हमारे 14 तक वैल्यूज है, तो 7 बॉक्सेस चाहिए, और नीचे जो है वो 8 बॉक्सेस जो है वो चाहिए। लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स से दिस इज ओरिजिन। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ये लाइन। ठीक है, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, सो हम इसको दोबारा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। नाउ इट्स परफेक्ट। Let's label this. This is positive x-axis, this is negative x-axis, and this is origin. And यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। एक वैल्यू मैं एक्स्ट्रा ड्रॉ करता हूँ, उसका उसका ये मकसद होता है कि वो बॉर्डर लाइन पे नहीं जाती, फिर वो जो वैल्यूज है -3 -4 एंड -5। अब ऊपर की तरफ आपने वैल्यूज जो आपकी y पे मैक्सिमम वैल्यू दोबारा दिखा देता हूँ बेटा, वो 13 आ रही थी, तो आपने 14 तक, मतलब आपको एटलीस्ट 7 बॉक्सेस जो ऊपर की तरफ चाहिए। तो लेट्स लेबल दिस। सो 1 सेंटीमीटर इज 2 यूनिट, सो हम यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 एंड 14 यहाँ तक हम करेंगे, बिकॉज हमें जो है वो 14 तक मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ऊपर जो है हम एक्स्ट्रा जो पार्ट है तो वो हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड नीचे की तरफ हमारे पास होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। एंड हियर वी हैव नेगेटिव वाई एक्सिस। सो नेगेटिव वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 एंड -16 तक हम ड्रॉ करेंगे मैक्सिमम वैल्यूज हमारे पास। ठीक है, एंड लेट्स रिमूव द एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ दिस ग्राफ। And this is negative y-axis. All right, now you can check that the graph is over here. So हमने इसको ग्राफ को लेबल कर लिया है। Now we will draw the coordinates for each function one by one, और आपके पास ग्राफ बन जाएगा। Okay, now let's paste the coordinates for each function one by one. So for the function y equal -2x plus 5, so these are the coordinates. All right, let me copy these coordinates from here. So these coordinates are -4 13 0 5 and 4 comma -3.
Let's draw these coordinates. Minus 4 comma 13 will be over here. So we need to move minus 4 unit on x-axis, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, and 13 unit on y-axis. So minus 4 comma 13 will be over here. And 0 comma 5 will be over here. And the last coordinate, that is 4 minus 3, and 4 minus 3 will be over here. Now we need to join these coordinates with the help of straight line. Okay, now we need to draw the line for other function as well. Then the coordinates for next function is minus 4 comma 11. Let me copy these coordinates so that we can easily plot this over here. So these are minus 4 comma 11, and minus 4 comma 11 आपके पास यहाँ पर आएगा, x एक्सिस पे minus 4 यूनिट्स मूव करने पड़ेंगे और y एक्सिस पे 11 यूनिट्स. So ये minus 4 comma 11 will be over here. All right, and then हमारे पास है 0 comma 3, and 0 comma 3 will be over here. ठीक है, और लास्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास है 4 comma minus 5, and 4 comma minus 5 will be over here. 4 comma minus 5 हमारे पास यहाँ पर होगा. All right, now let's join these points as well. Let me use scale here as well so that we can draw these lines very accurately. So these are this is line for second function. Now let's write the coordinate for next function. The coordinate for next function are minus 4, 4, 0, minus 4, and 4 minus 12. Let's paste these coordinates over here. So these are minus 4, 4. So minus 4, 4 will be over here. And then you have the next coordinate, that is 0 minus 4. And then the next coordinate is 4 comma minus 12, and 4 comma minus 12 will be over here. Let's join these coordinates. So here is the line for function 3. Let's write the coordinate for fourth function, that are minus 4 comma 1, 0 minus 7, and 4 minus 15. So these are the coordinates for fourth function, minus 4 comma 1. Let me move this scale away. Minus 4 comma 1, 0 minus 7, and then 4 minus 15. So minus 4 comma 1 will be over here. Then we have 0 minus 7, that will be over here. And then lastly we have 4 comma minus 15, and 4 comma minus 15 will be over here. All right, now let's join these points with the help of straight line, with the help of scale. So if we join these points with the help of a straight line, so we'll get a straight line as well. Now
these are the like straight lines for the functions given to you in question. All right, so now if you look at the part 2, so you need to tell what do you notice about the lines you have drawn in part 1. So you can check that the lines that you have drawn over here are parallel to each other. So it's a bit challenging for me to draw the graph on screen. That's why it took a little more time. So hopefully you understand this question, and if you have any sort of problem, so you may ask in comments. Okay, students, take care, goodbye, and Allah Hafiz.